Hello students, welcome back to the Tantra physics classes. I started work, power and energy and I have already delivered 4 lectures on that. And it is the fifth lecture and today I will discuss power. What is power? That is today's lecture. Power with its applications and also objectives for Neet and also higher level IIT problems in the second lecture. Those who watch my lecture, this lecture, they are advised or suggested to watch another lecture on IIT level questions. Okay, let me define what is power. Power, अगर ऐसे हम समझेंगे power basic definition, it is simply a work done in 1 second. Rate of doing work. Suppose somebody has started working from the morning till late in the evening. He has done, let me suppose, he has done 1000 joules of work in 6 hours. 1000 joules divided by 6 hours, it converts 6 hours into seconds. That is power, average power. You are starting early in the morning till late in the evening, and the average power is total work done by total time. Now, average power is total by total. What is instantaneous power? Instantaneous power is what you call as differentiation of work. What is work done? What is power at a particular time? It depends upon how fast you are working at that time. तो उसमें different calculus का इस्तेमाल होता है. So let me define work. Let me define power. Power, simply the rate of doing work. The rate of doing work. It is SI unit. SI unit is joule per second. इसको वाट भी हम लिखते हैं, मगर बेसिक यूनिट ये है इसका SI यूनिट. तो एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम. So power is, you see, sometimes you see, you say we have an electric coil. It is 1000 watt. What do we mean by that? Electric coil used in our homes, 1000 watt. That means it gives you energy of 1000 joules in 1 second. Absorptive power, how much energy I absorb. In thermodynamics, absorptive power, how much energy I absorb in 1 second, because energy absorbed is equivalent to work done. How much energy is absorbed per second is absorptive power, and every human emits also energy according to thermodynamics, like body radiations. You emit energy. How much energy you emit in 1 second is emissive power. How much energy you waste in 1 second, wastage of energy, dissipative power. Sometimes what you do is that you see electric bulb you get from the market, and on the electric bulb there is written, you see, 100 watt. What does that mean? That means it gives you 100 joules of energy in the form of light in 1 second. If it gives 100 joules of energy in the form of light, of course there is some other forms of energy with it. There is heat energy also a little bit with the bulb energy. So in short, it is power is energy by time. Energy transferred by time, energy absorbed by time, work done in by time. Mathematically, power is written as delta. Don't write delta W, because the moment I write delta W, you feel it is change in work. Delta W नहीं लिखना चाहिए, इसलिए कि डेल्टा W लिखने से आपको लगता है it is change in work. There is nothing like change in work. There is only work done in 1 second. It is equation number first. This is the math definition of power. Work done per unit time, or work done in 1 second. Now, second point, instantaneous power.
instantaneous power, P equal to, it is differentiation of work, ऐसे कुछ सेकंड इक्वेशन। मतलब सपोज आपने काम करना शुरू किया अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग, मैं आपको कह रहा हूं कि व्हाट वाज योर पावर एट 12 p.m. 12 p.m. or 11 a.m. or at a particular time, possibly at that time, possibly you are working very fast, तो उस वक्त आपका पावर ज्यादा हो सकता है as compared to the average power. Average is total by total work by total time, but instantaneous power is little work done in a small interval of time divided by that small interval of time, as that small interval of time tends to zero. That's how we do this in calculus. लेकिन यहां तो सिंपल है, वर्क को डिफरेंशिएट करना है, वर्क में भी द फंक्शन ऑफ टाइम, और आपने डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस पावर निकाला। अच्छा, यहां से मैं आगे थोड़ा सा जाता हूं, ये देखो P इज इक्वल टू डेल्टा W वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। If I write the small work done, F dot ds by dt, ये हो गया फोर्स, तो फोर्स है डॉट वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन आपका एक और इक्वेशन मिला पावर का, F dot v। इसका मतलब if somebody is moving with some velocity but also force is acting on it, that means you have to have a dot product of two force and velocity, you'll get the power। अगर यहां पर आपको पता चलेगा, अगर थीटा जीरो है, फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल जीरो है, तो पावर इज इक्वल टू एफ वी cos, because it is equal to एफ वी cos थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थीटा को जीरो कर दो, एफ वी हो जाएगा। अगर थीटा सपोज 90 है, पावर जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो होगा। अगर थीटा इज 180, मतलब वेलोसिटी आगे फोर्स पीछे, तो रिटार्डेशन तो होगा, वेलोसिटी तो कम हो जाएगा। The moment velocity becomes lesser, that means power is negative and the kinetic energy of the body decreases. When the kinetic energy of the body decreases, somebody is dragging it backwards. Obviously, the negative power is being delivered. So power is equal to minus Fv. तो ये तीन चीजें आप याद रखोगे, these three things. इक्वेशन 2 को थोड़ा सा मैं करके और एक चीज आपको बताना चाहूंगा। इक्वेशन 2 से थर्ड पॉइंट, वी नो P इक्वल टू डेल्टा W बाय डेल्टा T। तो इससे आगे अगर मैं इसको ले जाता हूं, तो क्या मुझे मिलने वाला है, ऐसे कुछ डेल्टा DW स्मॉल वर्क डन इज PDT, ऐसे। जरा दोनों साइड से इंटीग्रेट कीजिए, आप दोनों साइड से आप इंटीग्रेट कीजिए इसको, देखिए क्या होता है। ऐसे कुछ, राइट। तो ये खत्म। तो वर्क डन किसके बराबर हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी फ्रॉम T1 टू T2। जरा इस इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करो और मुझे बताइए क्या होता है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ पावर ओवर टाइम, इसका मतलब क्या है। अगर आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स आता हो तो आप इसका मतलब आप मुझे बताइए, गिव मी इट्स मीनिंग। इसका मतलब यह है कि वर्क डन इज एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। यू आर रिपीटेडली डूइंग इट फ्रॉम ग्राफिक्स। जब आप ग्राफ थ्योरी शुरू करते हो, किसी टीचर के साथ आप ग्राफ करते हो, तो यही उसका मतलब होता है। सो इट इज द एरिया अंडर व्हाट, so work done is this, and it is area under, yes, under power versus time graph, power versus time graph, power versus time graph। चलो और एक चीज हम करते हैं, हम बिकॉज वी आर डूइंग, हम पावर की बात कर रहे हैं, इसके साथ जो भी चीजें जुड़ी हैं, जो भी चीजें इसके साथ वाबस्ता है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन जरा और देख लो आप गौर से।
मैं इसी इक्वेशन को लेकर के और एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो एग्जाम में आता रहता है, तो देख लीजिए। फोर्थ पॉइंट, अगेन पावर इज इक्वल टू dw/dt. It is small work. You know what is work done? Small work done. What is small work? What is instantaneous work done? अगर आपको याद होगा, work done by all the forces equal to change in kinetic energy. That is dk/dt. और एक फॉर्मूला आपका मिला पावर के लिए, मतलब power on an object is just equal to the rate at which its kinetic energy changes. अगर इसका kinetic energy increase होता है, how much its kinetic energy increase in 1 second is the power delivered to the object. अगर इसका kinetic energy decrease हो रहा है, how much kinetic energy decrease in 1 second is the negative power delivered to the object. अगर इसको पॉजिटिव पावर आप दे रहे हैं तो समझ लो कि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर नेगेटिव तो इसका काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा. सो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन 1 सेकंड इज द पावर डिलीवर्ड टू द ऑब्जेक्ट. तो अब याद रखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, जब भी किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, समझ लो कोई एजेंट इसको पावर डिलीवर कर रहा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो सारी चीजें ठीक है. जरा और एक चीज करते हैं, अगर आप करना चाहोगे, यू कैन प्ले विद इट. अगर ये d/dt और ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो अगर मैं इसको आगे ले जाऊंगा थोड़ा सा मैथमेटिकल, तो क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन और मैथमेटिकल फिडलिंग, तो बहुत सारी चीजें निकल जाती है उससे. कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ निकल ही जाता है. सो इट इज 1/2 m को बाहर निकालो, तो इस v को क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, दैट इज 2v, फिर v का डिफरेंशिएशन dv/dt, राइट. तो ये तो खत्म हो गया. तो पावर इज इक्वल टू mv, और ये है एक्सेलरेशन. ठीक. वैसे mv जो है ma, वो तो फोर्स है, फिर से हो गया fv. सो वी हैव नॉट ऑब्टेन एनीथिंग न्यू. We are back to square one. We are already there where हमने इसको पहले ही निकाला है. Fv, force into velocity, is the power delivered to the object. लेकिन मैंने सोचा था शायद कुछ और निकलेगा, लेकिन निकला कुछ नहीं. हाँ, एक चीज जरूर है कि you can have mathematical freedom to do things. You can have mathematical juggling, it is called as. Okay, now fifth point. Fifth point. This is all about power. Now, let me talk about a unit of energy in terms of kilowatt hours. What is 1 kilowatt hour? जैसे हम घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल बिल आता है, वो किलोवाट आवर में आता है. यहाँ हमारे कश्मीर में 1 किलोवाट आवर का 4-5 रुपए देना पड़ता है. So that's also called 1 unit of energy. So 1 kilowatt hour, 1 किलोवाट आवर. देखते हैं ये कितना, इसको कहते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. वन यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, ये होगा 1 किलोवाट 10⁻³ ये वाला, ये W हो वाट, ये 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. ठीक. तो ये हो गया 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड. दिस इज 3.6 इंटू 10⁻, इसको 6 कर दो, वाट सेकेंड. तो वाट सेकेंड किसके बराबर है आपको पता है? वाट सेकेंड किसके बराबर? जूल के बराबर, क्योंकि जूल पर सेकेंड वाट के बराबर. तो जूल हुआ वाट सेकेंड. तो आपको अब रूल मिला, 1 किलोवाट आवर is equal to 1 unit of energy is equal to 3.6 into 10⁻⁶ joules. अच्छा खासा एनर्जी है. दिस इज वेरी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो मतलब इस एनर्जी के लिए जब आप घर में ये एनर्जी यूज करते हो, when you use this much of energy in your home in Kashmir,
in my state, you have to pay maybe 4 to 5 rupees per unit of energy. In Delhi, it is very cheap, but here in Kashmir, it is very expensive. Anyway, sixth point. अगर जूल की बात की जाए तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर बाय 3.6 into 10 raised to power 6 10 raised to power 6 ये वाला इसका उल्टा 1 जूल ये नीचे इसके नीचे लाओ. Sixth point. Now let me have some applications of this. कुछ applications की बात करूंगा मैं, कुछ power मैं निकालूंगा in real time situations power. Suppose ये है, this is a car moving in the forward direction with 36 kilometer per hour. It's a car moving in the forward direction 36 kilometer per hour, and its engine has to create a force in the forward direction to keep this velocity. Otherwise, agar force, if the engine will not apply a force in the forward direction, this velocity will not remain constant. It is just to keep this velocity constant against the friction, against the backward forces. Backward force भी है, तो इसको forward force create करना पड़ेगा to keep this velocity constant. Of course, the net force is zero because backward force equal forward force. Backward तो frictional है, many other forces, air drag है, बहुत सारी कुछ चीजें हैं, और इस कार इंजन को फॉरवर्ड की ओर फोर्स देना पड़ेगा. उस फोर्स की वजह से ही उसका कार का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा. वो एक्सेलरेट भी कर सकता है इफ ही एक्सपेंड्स मोर एनर्जी. तो suppose it creates a force of 1000 Newton in the forward direction so that this velocity remains constant. So F is equal to 1000 Newton and velocity of the car is 36 kilometer per hour. तो न्यूटन के साथ 1 किलोमीटर पर आवर मैच होगा नहीं. इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा. और अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं तो याद रखो 36 इंटू 5/18 इसको इसके लिए करना पड़ता है 5/18, तो बनता है मीटर पर सेकंड. ये याद रखने वाली बात है. किलोमीटर पर आवर को 5/18 मल्टीप्लाई करने से मीटर पर सेकंड हो जाता है. सो इट इज 10 मीटर पर सेकंड. तो आपका ये वेलोसिटी है. So now what is the power expended by the engine of the car? How much power it creates on the car to make its velocity constant as 10? Right? So simple formula that I have already told you, Fv, because force and velocity in the same direction. Put 1000 into 10, that is 10 raised to power 4 watt. Answer हो गया. सिंपल सा प्रॉब्लम था, लेकिन करना चाहिए. यू शुड स्टार्ट डूइंग दीज सिंपल प्रॉब्लम्स टिल यू गो हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर. चलो, 7th point. Let me tell you what is the power expended by force of tension. Let me suppose अगर ये पेंडुलम है ऐसे, तो ये ऐसे मूव करता है, तो टेंशन फोर्स ये है. यहाँ ऑब्जेक्ट है तो टेंशन ये है. वेलोसिटी टेंजेंशियल है v, यहाँ वेलोसिटी टेंजेंशियल है v, यहाँ वेलोसिटी टेंजेंशियल है v. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी? 90. हियर टेंशन एंड वेलोसिटी 90. ठीक. तो व्हाट इज पावर? दैट इज F डॉट v. दैट इज F v cos of 90. Because theta is 90 between these two, that is 0. No power is being expended by the tension. Tension does not create any power on the object. Therefore, इस टेंशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा. अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा किसी दूसरी वजह से, इस टेंशन की वजह से इसका ना स्पीड चेंज होगा ना इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा. अच्छा, 8th point. It is sun. It is the planet moving in the elliptical orbit. It is aphelion. Aphelion means away from the sun. It is perihelion here.
एपीलियन मीन्स व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सन, पैराहीलियन मीन्स व्हेन इट्स क्लोजर टू द सन। तो यहाँ आपको पता है वेलोसिटी ज्यादा होता है और यहाँ आपको पता है वेलोसिटी कम होता है व्हेन द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब जरा देख लो, यहाँ पर देखने की चीज है, फोर्स ये है और वेलोसिटी ये है टेंजेंशियल टू दिस पाथ, या थीटा लेस देन 90 है। इसका मतलब यहाँ पावर पॉजिटिव है। वो पावर पॉजिटिव क्यों है? वो पावर पॉजिटिव क्यों है? पावर पॉजिटिव इसलिए है कि पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस ऑफ थीटा। थीटा लेस देन 90 है तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया। जब कॉस ऑफ पॉजिटिव है तो दैट मींस पावर इज बीइंग डिलीवर्ड टू द प्लेनेट। अगर पावर डिलीवर हुआ बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, अगर पावर डिलीवर हुआ पॉजिटिव पावर, तो ये स्पीड इंक्रीज होगा। तो स्पीड इंक्रीज होकर के यहां तक अगर ये पूरा मैं एलिप्टिकल बनाऊंगा, यहां तक स्पीड इंक्रीज ही होता है। यहां पर इंक्रीज यहां से यहां स्पीड इंक्रीज होगा तो यहां स्पीड हाईएस्ट है। लेकिन जब आगे की बात आएगी, ये तो जब आगे की बात आएगी, लेकिन इसको अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा ताकि ये क्लियर हो जाए। इसको बनाना पड़ेगा अच्छी तरह से, इसको पूरा इलिप्स बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये हो जाता है। मतलब अगर यहां पर है, यहां पर जरा देखिए, ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है। अब देखिए एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90। तो अगर ग्रेटर देन 90 तो पावर बताइए, एफ वी कॉस ऑफ थीटा। मगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो ये नेगेटिव हो गया, तो पावर इज नेगेटिव। सो व्हेन द प्लेनेट गोज फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, power is negative. When the power is negative, the velocity or the kinetic energy of the planet decreases. That is why when it reaches here, it has minimum kinetic energy, and here it has maximum kinetic energy. So, yes, that's very important. Average power over a complete path is zero. Because whatever power is in this from here to here, the same amount of power is from here to there, but in the opposite direction. That means over a closed orbit, the power delivered by gravitational force is zero. Magar power delivered from here to here is positive, from here to here it is negative. Not, you see, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर एवरेज की बात और एक क्लोज पाथ की बात है, एवरेज पावर और एक क्लोज पाथ ऑफ ए प्लैनेट, दैट इज जीरो। अगर पार्ट्स में है, व्हाट इज द पावर फ्रॉम हियर टू हियर, है पावर है इन द पार्ट ऑफ द पाथ, बट फॉर complete path it is zero. So the average power delivered by the gravitational field over a complete orbit or a complete path of the planet is zero. The average power is zero. Average power is zero over a complete path, complete orbit. हो गया ये। Now let me go to another point. Power by centripetal force. Suppose a particle moves in a circle around an object. It has velocity v. Centripetal force is toward the center. What is the angle between velocity and centripetal force? 90. Okay. So power delivered by Fc is zero. Power delivered by Fc, centripetal force, is equal to zero because angle is 90. And by definition, Fv, that is एफ वी कॉस ऑफ थीटा, अगर थीटा 90 है तो हो गया जीरो। ठीक। वन मोर एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास है इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक। इसमें मैं क्या करूंगा,
इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इट मूव्स अपवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक। ऑब्जेक्ट या कार ही समझ लो, कार मूव्स इन द अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो हाउ मच इज द पावर एक्सपेंडेड बाय द कार इंजन? पावर एक्सपेंडेड बाय द कार इंजन, पहली बात है, हाउ मच फोर्स द कार इंजन हैज टू क्रिएट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, दैट फोर्स शुड बी mg sin थीटा, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये ऊपर की ओर ये फोर्स F क्रिएट करता है तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। सो दैट मींस दिस engine force has to kill this mg sin theta. So F should be equal to mg sin theta. So what is power? That is Fv, this force into this velocity, right? So that is mg sin theta into velocity. Khatam? Yes. Now let me go to some questions, Neet based questions. Neet based questions. Need based questions. यह है क्वेश्चन, a force of magnitude F acts on a particle moving with constant velocity v in the same direction. The instantaneous power delivered by the force is. यह बहुत इजी क्वेश्चन है जो अभी हमने दिखाया आपको। ये बॉडी है, it there's a force F acting on the body and it moves forward with velocity v, ये वाला, in the same direction. What is power? Instantaneous power. That is F into v. Finished. Answer. B is the answer. B is the answer. ये वाला। Second question. Second question. चलिए, सेकंड क्वेश्चन। चलो पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट करूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट करते हैं ऐसे कुछ। ऐसे, ठीक है। ओके, ये है क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या है क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 2 इजी होगा। A 100 watt electric bulb is used for 6 hours daily. How much electrical energy does it consume in 10 days? एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो हमारे घरों में होता ही है, 10 वॉट्स, 100 वॉट्स का पहले होता था, 100 वॉट्स का इलेक्ट्रिक बल्ब है। हर दिन आप इसको 6 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हो। 6 दिन में कितना पावर आप इस्तेमाल करोगे? कितना एनर्जी 6 दिनों में इस्तेमाल करोगे? यह है पावर। 100 वॉट का बल्ब रोज आप 6 घंटे यूज करते हो, 10 दिन में कितना एनर्जी यूज करोगे? दैट्स इट। पावर इज इक्वल, ओके, पावर इज इक्वल 100 वॉट टाइम डेल्टा टी। हाउ मच इज द टाइम? 6 hours a day, 6 into 60 into 60 seconds a day into 10 days, इतना सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स, दैट इज 6 into 6 into 6, 21 into 10 raised to power 3, इतने सेकेंड्स,
व्हाट इज एनर्जी? अगर आपको याद होगा, व्हाट इज एनर्जी? दैट इज पावर इनटू टाइम, because energy delivered is power delivered is equal to energy per unit time. तो एनर्जी हुआ पावर इनटू टाइम, इट्स द सेम थिंग एज वर्क डिवाइड बाय टाइम. चाहे वर्क निकालना हो, एनर्जी निकालना हो, दैट इज पावर इनटू टाइम. तो हाउ मच इज पावर? 100. What is time? 216 into 10 raised to power 3 seconds. That is 216 into 10 raised to power 5 joules. That is 21, yes, 21.6. यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा तो हो गया 10 raised to power 6 joules. यहाँ 21 पॉइंट लगा करके यह 10 पर 6 होगा. तो इट इज 21.6 million joules, megajoules. Answer. This one is the answer. This one is the answer. This one is the answer. Okay, third question. Third question. Third question. चलिए, third question. An electric motor lifts 600 kg load vertically through a height of 50 meters in 20 seconds. The average power developed by the motor is 600 या 600 kg का वेट है. इसको आप ऊपर की ओर ले रहे हैं किसी फोर्स से, और 50 मीटर के हाइट पर ये ले जाते हैं आप इसको. 50 मीटर के हाइट पर कितने सेकंड में? 20 सेकंड्स में लेते हैं. हमें देखना है कि ये जो फोर्स है इसने कितना, इसका पावर कितना है. हाउ मच इज पावर क्रिएटेड बाय दिस फोर्स. पहले ये फोर्स, इफ दिस बॉडी इज टू बी लिफ्टेड कॉन्स्टेंटली अपवर्ड्स, मींस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड्स, if this body has to be lifted with a constant velocity upwards or slowly upwards, फिर आपका ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? 600 मास mg के बराबर इंटू 10. ये फोर्स होना चाहिए न्यूटन. ठीक, अब वर्क किसके बराबर है? एक तो ये फोर्स दैट इज 600 इंटू 10 इंटू दिस 50, ये हो गया वर्क. पावर कितना हुआ? एक है वर्क बाय टाइम, दैट इज 600 इंटू 10 इंटू 50 डिवाइड बाय 20. ये खत्म हुआ. 5 2 5 are 10, 5 5 25, 25 into 6, 25 into 6, 15150 और ये 2 0. ठीक, इट इज 15,000 वाट, और इसको कहते हैं 15 किलोवाट भी, क्योंकि 10⁻³ जो है किलो हो जाता है. सी इज द आंसर. दिस सी इज द आंसर. C is the answer. Fourth question. Fourth question. Fourth question. Fourth question. Fourth question. चलो इसको क्रॉपिंग पहले करते हैं. ओके, चलो.
Question number 4. Question number 4. 1000 kg car starts from rest and reaches a speed of 20 meters per second in 10 seconds under constant acceleration. What is the average power developed by the engine? 1000 kg car hai, it moves, starts from rest, accelerates. When it accelerates, it achieves a velocity of 20 meters per second after 10 seconds. हमें देखना है कि how much power is expended by the car engine. Right? Okay. Power is equal to, okay, you know that is work by time. Work is nothing but change in kinetic energy. Change, पहले एनर्जी जीरो है, लास्ट में ये है, by delta t. It is power is equal to 1/2. मास दिया है, ये वाला मास 1000 kg. Velocity 20 meter, that is 20 into 20. So कह रहे हैं ना, by delta t time 10 seconds. ये खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, 2000 और एक जीरो हो गया, ये 20 और ये 3 जीरो हुए किलोवाट्स. आंसर सी इज द आंसर. हियर 20 किलोवाट सी है, ये आंसर है. 5th क्वेश्चन. ये आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और एक चीज यूज होता है, एवरीथिंग यू आर यूजिंग, वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सब कुछ आता है. Okay. Fifth question. Question number 5. क्या है क्वेश्चन? A battery supplies a current of 2 amperes to a circuit at a constant potential difference of 12 volts. What is the power delivered by the battery? ये सर्किट समझो आप, और ये बैटरी समझो 12 वोल्ट का, और ये करंट भेज रहा है 2 एम्पियर्स. कह रहा है कि इस डिवाइस को, ये जो डिवाइस है, चाहे सर्किट हो डिवाइस हो, इसको कितना पावर हमने बैटरी ने डिलीवर किया है. हाउ मच पावर हैज बीन डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू द सर्किट, दैट इज द क्वेश्चन. अब आप कहेंगे नहीं सर, ये तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ रहा है. लेकिन बेसिकली तो पावर इज द सेम फॉर्मूला, द बेस रूल इज द सेम, बेसिक डेफिनेशन इज द सेम. चलो मैं यहां से ही करता हूं. इफ आई आस्क यू व्हाट इज पावर, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे पावर इज dw/dt. फिर आगे जाकर मैं कहूंगा ये तो d/dt है, और ये जो चलिए ठीक है, पावर इज इक्वल डेल्टा w/Δt. इसको लिखना चाहिए ओनली w. 1/Δt. व्हाट इज वर्क डन देयर इन electrostatics? Work done is potential difference into charge shifted. Then charge shifts from positive terminal to negative terminal. When you apply potential difference, charge is flowing through this circuit. This potential difference pushes the charge across the circuit. That is delta Q under the potential difference of V. That's the work done on the charge. This one. तो ये हो गया P is equal to V को बाहर लाओ, डेल्टा Q by क्या करो डिवाइड, डेल्टा T. सिर्फ ये याद रखना है कि वर्क डन इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस टू चार्ज डिलीवर्ड या चार्ज शिफ्टेड या चार्ज ट्रांसफर्ड. सो इट इज VI. What is V? That is 12. What is I? That is 2. 24 watt is the answer. 24 watt should be the answer. C is the answer. C is the answer. 24 watt. These were the 5 questions of NEET level, but you can do more questions from different books, and on this what you call as this comment section, you can ask me what questions you need at the NEET level. So these were the simple questions, but again
after a little, after 10 minutes or 15 minutes, I am uploading one more lecture, where questions, I will solve questions of IIT level. Neet students can also watch that lecture. Their physics will improve. Their physics will get, they will get more familiar with good questions. And now, this was a series of lectures on this work, power, and energy. This was the fifth lecture. And now, the sixth lecture will be objectives. I have some 40 objectives from Neet to IIT level. All the 40 objectives I will discuss with the students, but continuously watch the lecture so that your physics will get improved over time. Thank you.